Good morning, everyone. I am Dr. Rekha Purohit from Lucky College, Lucky Institute of Professional Institute. Today, we are going to learn one of the most exciting technologies of the 21st century, artificial intelligence and machine learning. Almost every apps that we use daily, Google search, YouTube's, Instagrams, Netflix, Amazon, Cloud, ChatGPT, Alexa, etc. Uh, etc. use artificial intelligence. Before starting, let me ask you a question. जैसे कि how you ever received product recommendation on Amazon, or have you noticed that you YouTube remembers or recommends YouTube according to your interest? Why does this happens? ऐसा क्यों होता है? कभी हमने सोचा है? Because these applications use AI and machine learning. Today we will understand what is AI, applications of AI, definitions, characteristics, types, what is machine learning, how machine learning process, types of machine learnings, differentiate between AI and ML, and in which field AI use ML to produce artificial intelligence. And last, advantage of AI ML. First, what is artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की ब्रांच है जिसे हम कह सकते हैं इट इज अ कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो कि इनेबल्स करती है, दैट इनेबल्स टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस such as learning, reasoning, problem solving, decision making, and understanding languages. And machine learning. Machine learning is a subset of AI. It is not a AI, it is a subset of AI that allows computers to learn from data and improve their performance without being explicitly programmed instead of following fixed rules. ML system identify patterns. It identify patterns in data and make predictions or decisions based on those patterns. Now, we can define AI in terms of it is the ability of computer or machine to think, learn, and make decisions like a human to solve problems. Artificial intelligence is the science and engineering of creating intelligent machines that can perceive their environment, learn from data, reasons, and take actions to achieve a specific goal. So we can say that step by step, it is guide the human beings or a person or a machine. We can say that it is guide the machines how to take input, yani ki how we collect data like text, images, voice, video sensors, and how after collecting data we can processing. एनालाइज कैसे करेंगे डेटा को? क्या हम डेटा को एनालाइज करने के लिए एल्गोरिथम्स यूज लेंगे? एंड लर्निंग, कैसे मशीन उस पैटर्न को लर्न करेगी डेटा से? लर्न करने के बाद में किस तरह से वो डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करेगी? प्रिडिक्ट और चूजन द बेस्ट एक्शन आफ्टर डिसीजन मेकिंग एंड देन प्रोवाइड द रिजल्ट्स और perform an actions as in a form of output. Now, different authors define artificial intelligence in their terms. One of the author is John McCarthy. He says artificial intelligence is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. Artificial intelligence enables machines to think, learn, solve problems, and make decisions in a way that resembles human intelligence. Then it is the characteristics of AI. AI में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर डिसीजन लेने की पावर होती है. So it is a decision maker. This is a learning process. This is reasoning, problem solving, automations, natural language processing, knowledge presentations, accuracy, continuous improvement, speed, adaptability, and many things more. Like if we want to about learning, learning is a characteristics in which learns from data and experience. A machine learns from data and experience, just like we can say that example, we always use Netflix. Netflix recommendations are the examples of learning by the machine. Reasoning, it means we can making logical decisions, just like chess, AI chess,
In mobile applications, in mobile we have a chess application, and one person can play with machine. Another player is a machine. It is a artificial intelligence characteristics. Problem solving, solves complex problems just like a Google Map. जब हम कहीं बाहर जाते हैं, गूगल मैप को यूटिलाइज करते हैं, ये आपको रोड मैप प्रोवाइड कर देता है, आपको जहां जाना है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, आप कहाँ इजीली अप्रोच कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिफाइन करके दे देगा गूगल मैप्स. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में बेस्ट एक्शन को चूज करना, जैसे कि कहीं पे जब हम ईमेल ट्रांसफर करते हैं, कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई विच इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. प्रिसेप्शन, रिकॉग्नाइज करना इमेज को, स्पीच को एंड ऑब्जेक्ट्स को. जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं, मोबाइल्स में से कुछ लिखवाना होता है हिंदी में, तो हम लोग हम गूगल का असिस्टेंट में वॉइस असिस्टेंट को ओपन करते हैं एंड देन हम बोल देते हैं और वो हमें राइट करके सारा की सारा प्रोवाइड कर देता है. इट इज अ एआई. एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है एंड देन उसको इंटरप्रीट करता है और रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि चैट जीपीटी, एलेक्सा एक्सेट्रा. नॉलेज इज अ रिप्रेजेंटेशन, स्टोर करता है और यूज करता है नॉलेज को डिसीजन मेकिंग करने के लिए, जैसे कि मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम्स. अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी में है एडजस्ट द न्यू इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्पैम्स को फिल्टर करना. ऑटोमेशंस, परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली. इंडस्ट्रियल रोबोट्स. एक्यूरेसी, प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. मेडिकल डायग्नोसिस. Speed, process data rapidly. Financial analysis is doing fast by AI tools. Applications, in which field we can use AI? AI को हम लोग हेल्थ केयर में यूज ले सकते हैं, AI को हम एजुकेशन में यूज ले सकते हैं, AI को हम बैंकिंग में यूज ले सकते हैं, AI को हम लोग मेडिकल्स में यूज ले सकते हैं, एजुकेशन, बैंकिंग, ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड मेनी मोर फील्ड्स वी कैन यूज इट. In healthcare, AI tools to diagnose disease. एजुकेशन के अंदर पर्सनलाइज लर्निंग्स के लिए इसको यूज लिया जाता है. बैंकिंग के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन को, जैसे क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो. ई कॉमर्स में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए इसे यूज लिया जाता है, जैसे अमेजोन है. अभी हमने बात की थी सबसे पहले यूट्यूब पे या अमेजोन पे, जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो तो जब भी आप दोबारा उसे खोलते हो तो आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है. वो एआई का ही एक एप्लीकेशन है जिसमें कि ई कॉमर्स जो कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है. ट्रांसपोर्टेशन, रूट ऑप्टिमाइजेशन गूगल मैप्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप मॉनिटरिंग जो कि एआई ड्रोन्स के द्वारा प्रोवाइड होती है. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फैक्ट्री रोबोट्स, साइबर सिक्योरिटी के अंदर थ्रेट डिटेक्शन करना हो, स्पैम फिल्टर्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं. एंटरटेनमेंट, कंटेंट रिकमेंडेशंस, नेटफ्लिक्स. और मोस्टली हम लोग आजकल किसी भी काम को करना, बेसिकली स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो चैट जीपीटी पे जाकर के अपना डेटा डाल देते हैं और वो आपको पूरा रूट बना के दे देता है उसके अंदर क्या पढ़ना है. चैट जीपीटी, सीरी, एलेक्सा, ये सारे आपके वॉइस कमांड पे भी काम करते हैं. अब आ जाते हैं हम लोग मशीन लर्निंग पे. व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग, नाउ कम्स मशीन लर्निंग. मैनी स्टूडेंट्स थिंक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं एआई एंड एमएल आर द सेम. एक्चुअली machine learning and AI is not the same, because machine learning is the subset of AI. Think of AI as a big circle. अगर हम माने कि एक AI जो है बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल होता है जो होता है हमारा मशीन लर्निंग. एंड मशीन लर्निंग के अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स को और उसके अंदर डीप लर्निंग को एज्यूम करते हैं. तो मशीन लर्निंग we can say that it is a subset or a branch of artificial intelligence. It is a technique. We can say that it is a technique that allows computers to learn from data. जो computers को data से learn करना, सीखने के लिए permission देती है, patterns को recognize करने के लिए permit करती है, and make decisions after learning from data and recognize pattern. It makes decision or predictions and improve the performance. Develops algorithms and statistical models without being explicitly programmed for every task. हर task के लिए इसे program करने की आवश्यकता नहीं होती है. Instead of following fixed rules के instead ML algorithms identify patterns in data, learn from experience and make predictions or decisions. This is the roadmap, or we can say that flow. First, machine learning initiate raw information in form of data.
which are called data sets. After collecting, after initiate or collecting data, it प्रोवाइड डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे डेटा की क्लीनिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, इंजीनियरिंग फीचर्स उसके ऊपर अप्लाई करना. आफ्टर डेटा रिप्रोसेसिंग इट प्रोवाइड्स ट्रेन एमएल मॉडल्स, फीडिंग प्रोसेस डेटा इनटू एन एल्गोरिदम टू फाइंड पैटर्न्स. पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए वो एल्गोरिदम्स के अंदर डेटा को प्री प्रोसेस फीडिंग करता है. उसके बाद में मॉडल उस पैटर्न को लर्न करता है. तो नेक्स्ट स्टेप इज मॉडल लर्न पैटर्न्स, यानी कि इटरेटिव ट्रेनिंग्स, ऑप्टिमाइजिंग पैरामीटर्स एंड रिड्यूसिंग एरर्स. इन दिस वी कैन परफॉर्म आफ्टर मॉडल लर्न पैटर्न्स. आफ्टर इट वी प्रेडिक्शन, after it a step is prediction and decision, output predictions, classification or insights for new data, and then last is improve accuracy, enhance performance, precise outputs, evaluate feedback loops. Machine learning process. Machine learning process is a systematic sequence of steps used to develop an ML model that can learn from data and make accurate prediction or decisions. A successful ML model depends not only on the algorithm. I repeat, a successful machine learning model depends not only on the algorithm but also on the quality of data, proper training and continuous evaluation. This is the flow of machine learning process. First, it identify problem definition. After it collect data. After process data. After featured engineering, apply featured engineering. Then selection of model. Then training of model. Then evaluation of model. Then hyperparameter tunings. And then model deployment. After all, it monitoring and improvements of the model. Types of machine learnings. Machine learnings is a branch of artificial intelligence, enables computers to learn from data without being explicitly programmed. Based on how the model learns, machine learning is divided into three main types: supervised learning, unsupervised learning, or reinforcement learning. First, supervised learning. Supervised learning is a type of machine learning in which the model is trained using labeled data, input data along with the correct output. In labeled data, it means input data along with the correct outputs. The algorithm learns the relationship between the inputs and outputs. After inputting data or वो भी labeled data, the algorithm learns the relationship between inputs and outputs and predicts results for new data. Working, collect labeled training data, train the ML model, test the model with new data and predict the output. Examples are email spam detections, students result predictions, etc. Next, unsupervised learning. Unsupervised learning is a type of machine learning where the model learns from unlabeled data. It identifies hidden patterns. It identifies hidden patterns because it learns from unlabeled data, relationships or groups in the data. Working process. सबसे पहले collect unlabeled data. After, find hidden patterns or clusters. Group similar data automatically. And then process. Examples: customer segmentations, recommendation systems, fraud detections, market baskets analysis, etc. Reinforcement learning. Reinforcement learning is a learning technique where an agent learns by interacting with the environment. Learns by interacting with the environment. Receives rewards for correct action and penalties for incorrect actions. Working, first agent performs an action, environment provides feedback यानी कि rewards or penalty, agent improves its future decision, process repeats until the best strategy is learned. Example: self-driving cars.
रोबोटिक्स, गेम्स प्लेइंग जैसे कि चेस, गो, ड्रोन, नेविगेशन एक्सेट्रा। एआई अस एमएल, इट मींस एआई और एमएल में क्या डिफरेंस है, दोनों का कंपैरिजन। सबसे पहले एआई, एआई इज अ ब्रॉड फील्ड दैट एम्स टू मेक मशीन्स इंटेलिजेंट, जिसका कि प्राइमरी गोल ये होता है कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, वो ह्यूमन की तरह सोच सके और रिएक्ट कर सके। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज सबसे टफ एआई दैट इनेबल्स मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा, जो कि मशीन को डेटा से लर्न करने में सक्षम करती है। फोकसेस ऑन सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, एआई हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस के सिमुलेटिंग पर फोकस करती है, वेयर एज मशीन लर्निंग फोकस करती है लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम डेटा, डेटा को, पैटर्न्स को डेटा से कैसे हम लर्न कर सके उसके ऊपर फोकस किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन वर्क विथ और विदाउट लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना और साथ में या बिना लर्निंग के भी वर्क कर सकता है, लेकिन मशीन लर्निंग ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम डेटा, ये हमेशा डेटा से लर्न करेगा फिर ही उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। इंक्लूड्स रीजनिंग, प्लानिंग, एनएलपी, रोबोटिक्स, कंप्यूटर्स विजन और मशीन लर्निंग एआई, बट only machine learning mainly deals with predictions, classifications and pattern recognition. AI goals is intelligent decision making, whereas ML goal is improving performance through experience. Examples of AI is virtual assistants, autonomous robots, etc. Whereas machine learning examples are spam filters, recommendations, etc. Fields of AI where uses ML by AI. In natural language processing, AI use machine learning to understand and generate human languages. For an example, ChatGPT, Google Translate, etc. AI use कंप्यूटर विजन के, मतलब कंप्यूटर विजन में रिकॉग्नाइज करने के लिए इमेजेस और वीडियोस को मशीन लर्निंग को यूज करता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि एमएल को यूज करेगा, जिससे कि एमएल कन्वर्ट कर सके स्पीच को टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि सीरी है, गूगल असिस्टेंट है, एक्सेट्रा। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के अंदर एमएल में इनेबल रोबोट्स टू लर्न टास्क, एमएल का यूज होता है जिससे कि वो रोबोट्स को टास्क को लर्न करने में सक्षम बना सके। इंडस्ट्रियल रोबोट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम में एमएल जो होता है, क्योंकि इसके पास होती है डिसीजन पावर, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर एमएल को यूटिलाइज करते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर एमएल का यूज लिया जाता है पर्सनलाइज कंटेंट्स को सजेस्ट करने के लिए, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, यूट्यूब है, एक्सेट्रा। ऑटोनोमस व्हीकल्स जहां पर होते हैं वहां पे ड्राइविंग डिसीजंस को लर्न करने के लिए एमएल को यूटिलाइज किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर थ्रेट्स और एनोमलीज को डिटेक्ट करने के लिए एमएल को यूटिलाइज करता है एआई। एंड हेल्थ केयर में डिजीज का प्रेडिक्शन करना हो, मेडिकल को इमेजिंग करनी होती है किसी चीज की, तब हम लोग तब एआई एमएल को यूटिलाइज करता है। एडवांटेज ऑफ एआई एंड एमएल, इतनी देर से हम एआई एमएल पढ़ रहे हैं, तो कुछ विशेषता होगी तभी तो हम उसे पढ़ रहे हैं। इसलिए एआई के एडवांटेज होते हैं कि ये ह्यूमन के एफर्ट्स को रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ जो टास्क बार बार रिपीट होता है उसकी भी फ्रीक्वेंसी को, मतलब उसकी भी जो आउटकम्स होती है उसको रिड्यूस करता है। वर्क करता है 24/7 विदाउट फैटिग्यू, improves decision making accuracy, then performs dangerous tasks safely, increase productivity and efficiency, automates routines business processes, enhances customer services through chatbots, supports healthcare diagnosis and treatments, improves security through intelligence monitoring, enables innovation in robotics and automation, whereas machine learning provide various characteristics in learn automatically from data, improves prediction accuracy over time, identifies hidden patterns in large data sets, automates data analysis, handles complex problem efficiency, supports personalized recommendation, detects frauds and anomalies quickly, helps businesses make data-driven decisions, reduce manual programming efforts, continuously improves
as more data becomes available. Thank you.